speed at a Mumbai local train station claims 22 lives, many more left injured. Peak travel hour, heavy rains add to woes. कि मुंबई में ऐसे कई फुट ओवर ब्रिजेस हैं जहां पे काफी कंजेशन रहता है। इन सब का भी सेफ्टी ऑडिट करने के लिए और कैपेसिटी ऑडिट करने के लिए मैंने निर्देश दिया है। Piyush Goyal lands in Mumbai to face angry citizens, orders the routine high-level probe into the horrific tragedy. Apathy killed 22 people today, and then authorities defaced the dead bodies and put their faces on a big poster. Has humanity completely died in this country? It was a disaster waiting to happen, alleged furious commuters. Netas worked towards renaming it Prabhadevi but ignored to revamp the colonial era infrastructure. Netas who are disconnected with the reality now rush to offer condolences. What will you do to fix the problem? Asks Mumbai. In Feb 2016, then Railways Minister said Elphinstone revamp was under consideration, but nothing happened. This tragedy could have been averted. You're watching The Big Story with me, Avni Raja. The morning of September 29, 2017 has gone down as one of Mumbai's darkest and bloodiest hours. 22 of our own have lost their lives to a tragedy that, if rectified in time, could actually have been completely avoided. These 22 people would have been with us today had successive governments heeded warnings. At 10:30 this morning, 4 trains arrived around the same time and a huge crowd tried to get out. The bridge at Elphinstone was already crowded after a sudden spurt of heavy rain that had people scurrying for cover. Few witnesses claim that rumors led to a situation of panic. Within moments, many were crushed to death. The fact that the narrow Elphinstone bridge needed a relook was clearly highlighted to the Central Railway Ministry back in 2016, but no action was taken to rectify the problem. Paucity of finances was the reply that was given by then Railway Minister Suresh Prabhu. An accidental death report has now been filed at Dadar police station. Listen out first to some voices of angry citizens. कितने सालों का मैं देख रहा हूं कि आने जाने के लिए हमारी 3-3, 4-4 ट्रेन छूट जाती है, ऊपर से नीचे जाने के लिए, नीचे से ऊपर आने के लिए, फिर भी इनकी आंख नहीं उगड़ती है। क्यों, कहां अटका हुआ है मामला मालूम नहीं पड़ रहा है। अगर ये ब्रिज दूसरा एक वहाँ कनेक्शन दिया होता वेस्ट में, तो ये हादसा नहीं होता था। देश का चौपट सिस्टम, रेलवे का चौपट सिस्टम के कारण ये सब हुआ। देखोगे तो इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा, क्योंकि हर कोई बोलेगा कि मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो हम लोग क्यों नहीं पहले कोई एक्शन लिया जाए ताकि ये ना हो। मेहरबानी कर गुजारिश कर रहे हैं कि रेलवे प्रशासन को इतना भी पता नहीं है कि एवरी डे आज कितने टाइम से, कितने साल से वो लोग सीसीटीवी फुटेज लगा के बैठे हैं। वो लोग को इतना भी पता नहीं है कि कितनी पब्लिक आ रही है, जा रही है। रेलवे ब्रिज है वो हॉकर्स लोगों ने कब्जा करके रखे। यहाँ पब्लिक को चलने को जगह नहीं है और पुलिस वाले हफ्ता खा के हॉकर्स धंधा करते हैं। वहाँ पे ब्रिज पब्लिक के लिए है या हॉकर्स के धंधा करने वाले लोग के लिए? औरत लोग प्रेगनेंसी के औरत लोग नीचे गिरे हुए थे, एक पुलिस ने उसको उठाने के लिए आया। हम लोग तीनों तो उठा के हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो पुलिस का काम का है। पब्लिक रो रही है तो यहाँ की स्थानीय पब्लिक को पूछ लेना कि ये पोजीशन क्या है। जो कंटिन्यू का यहाँ के ट्रैवलिंग करते हैं उन लोगों से आप पूछ सकते हैं। पुलिस देखती है अपने अपनी जगहों पे बैठी है, मगर जब हादसा होता है वो पब्लिक को ही पता होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। वो ब्रिज बना के लगा, वो ब्रिज पे तो इतना पब्लिक आता था, उसको तो कुछ सेफ्टी नहीं है। सुबह 6:30 बजे से चालू जो होता है ना पब्लिक, वो 8-9 बजे तक ऐसे ही रहता है पब्लिक। All right, I'm joined by Harsha Shah, who is the president of Commuters Association. Thank you very much, Harsha, for joining in. You know, my first question to you is the fact that this was not something that was new, it was not unknown, it was not as if it happened suddenly out of the blue without anybody knowing that this was a danger. It has been highlighted several times by several people, including by commuters themselves. And the fact that this tragedy could have been avoided is even more heartbreaking.
All right, I think we're not getting the audio. We'll go across to Harsha in a bit, but also joining me is Bhai Jagtap from the studio. Mr. Jagtap, the same question actually to you. The fact that this is not something that was unknown, it is not the first time, or it's not the out of the blue that something like this has happened, and it could have easily been avoided. Certainly. Let me just give my heartfelt condolence to those who have lost their life in this unfortunate, tragic accident. And I don't consider this as an accident. This is, as you rightly said, this was known to everyone, because a lot of commuters, a lot of people, they complain about it, and everybody knows about it. It's not whether it's then that government, this government, whether it was my government or this government, it hardly matters. Because if you remember last time when Mr. Prabhu was the railway minister, he not only assured, he said within stipulated time, this question will be handled, this problem we will handle, and everything will be fair. That never happened. On the contrary, I would like to draw your attention towards one very important change which this government has made. We know for sure there was a railway budget, a special railway budget till last year. The finance minister, Mr. Jaitley, mentioned in his speech, we would like to give more money in the general budget, and that's why they scrapped the railway budget. We were very keen for the railway budget for the simple reason, because when you discuss a particular budget, you can throw some light, you can bring out all those difficulties, all those problems, and you can discuss in detail on the floor of the house, which never happened. 2016, this government just announced, as usual, this Jumlebaj government which we are facing last 3 years, they announced 45,000 crore rupees for infrastructure development. Now, I found out last time also, because there was a discussion in Maharashtra Assembly regarding Mumbai and all the railways and other infrastructure, everything. When we were trying to find out how much money has been allocated, not a single rupee is allocated towards the infrastructure. So, and that is why I'm saying this is not the accident, but I would suggest, I would recommend the police should register a murder case against the officers, railway officers, as well as they should, the accused number 1 should be the railway minister, Mr. Piyush Goyal. But Mr. Jagtap, the fact is that it's not, it is, yes, of course, this is a horrible tragedy that has happened, but it's been the fault of successive governments, because like I was saying, it's not just something that was out of the blue. No. This particular station is over 150 years old, and they obviously cannot handle even 4 trains together. That is what happened today, and that's what caused this entire tragedy. So obviously it was the fault of successive governments who have not taken and done something about this in spite of knowing. I fully agree with you on this. I never said this is, and this is what I mentioned. I'm not just talking about this government and that government. But the fact remains there, when the Commuter Association took up appointment from a railway minister, and he committed certain things. Not only that, there was a discussion in general budget also regarding the infrastructure development, and that was the reason, and that was the time, that was the budgetary session where they announced this 45,000 crore budget, rupees for the infrastructure development. That is exactly I'm saying. I just don't wanted to pass the ball towards this government and that government, but the fact remains, yes, if today we are talking about bullet train at the cost of 116 lakh rupees, I agree with you. When it comes to bullet train,
the Japan government is going to support. But that doesn't mean the government has to ultimately pay the money. So today we don't need bullet train. We are talking about the security of the commuters, security of the development of the infrastructure, and of course. Absolutely, Mr. Jagtap, and that is the key issue: the security of the commuters that is again and again being brought to light. And in fact, let me go to Harsha Shah, now President of Commuters Association. Harsha, thanks for joining in. What attempts have you made to sort of get the authorities to sit up, take notice that there is an important issue here that needs to be solved, that needs to be resolved, and otherwise a tragedy like this could have occurred? बॉम्बे रेलवे की स्थापना अगस्त 1845 में हुई है। आज 163 साल हो चुके हैं और मध्य रेलवे की स्थापना 1951 साल में हुई है। वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे में आप देखिएगा 3000 रेलवे लोकल चलती है और 80 लाख यात्री रोज सफर करते हैं। जितने भी ट्रेनें हैं उनको डिमोलिश करके भंगार में डालना चाहिए। वो उसमें भी जान का बहुत खतरा है। रोजाना बहुत सारे लोग मरते हैं। इवन जो आज ब्रिजेस की वजह से जो ये बड़ा हादसा हो चुका है, रेलवे में प्लेटफॉर्म छोटे हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़नी चाहिए। मिनिमम 24 कोच की ट्रेनें खड़ी रहनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए। एलोग्रेटेड ट्रेन होनी चाहिए और सबसे बड़ी 12 कोच की और 15 कोच की जो ट्रेनें चल रही है, 3 मिनिमम ब्रिजेस होने चाहिए। उस जमाने में 1850 साल में जो ब्रिजेस बनाए हैं उसकी चौड़ाई आप देखेगा, एक ट्रेन आती है तो 10,000 पब्लिक उसमें से आती है। सोचेगा वो लोग कैसे जाते होंगे, आते होंगे। उसका मेंटेनेंस टेम्परेरी रहता है। हमारे यहाँ PWI एक सेक्शन है, वो तो ऐसे जैसे कपड़ा फटता है तो उसको हम रफू करते हैं, इस तरह से वो उसका मेंटेनेंस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे के GM हमारे सिक्योरिटी गार्ड सेफ्टी सुरक्षा वगैरह सब देखते हैं। उनकी पहली ड्यूटी रहती है कि यात्रियों को सुरक्षा, सेफ्टी और सर्विस देना अनिवार्य है। उनकी ड्यूटी रहती है कौन से स्टेशन पे क्या क्या होता है। दिन में 50 बार यदि इंस्पेक्शन होता है, यात्रियों को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ये डेली हादसे होते हैं। आपने कभी देखा है क्या हमारा GM, DRM, एडिशनल CPO वगैरह, रेलवे के मिनिस्टर वगैरह, कोई रेलवे का अधिकारी मर गए, उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उनके पीछे 200 लोग रहते। अभी ये उनके ऊपर केसेस होना अनिवार्य है। खाली 10,000 5 लाख रुपया देने से कुछ बनता नहीं। और उनका तो इंश्योरेंस भी आप देखेगा, टिकट और ऑनलाइन वालों को 92 पैसे लेके 10 लाख का इंश्योरेंस देते। उससे क्या होता है, जिसकी जिंदगी बर्बाद होती उसने आपने कभी देखा है क्या। और मजे की बात देखो, आज वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे पे पीयूष गोयल सर का हमारा आज कार्यक्रम था। और मजे की बात है कि वो किंग सर्कल में रहने वाले बॉम्बे का व्यक्ति होते हुए भी उनको मालूम नहीं रेलवे में क्या करना चाहिए। बजट जो सुरेश प्रभु जी ने कैंसिल किया वो गलत किया है। आम पब्लिक का वो हक है, वो पारदर्शकता पब्लिक को पता होनी चाहिए कि मेंटेनेंस के लिए अप टू डेट करने के लिए क्या करना चाहिए। वो कौन से पब्लिक की चिंता करते हैं, पैसे लेते हैं। उनको एक है कलेक्शन इकट्ठा करना। एक ट्रेन में कैपेसिटी यदि लोकल की 800-900 है, क्यों 10,000 उसमें डालते हैं। कहाँ है विजिलेंस और कहाँ है क्या। वो लोग इतना करने के बावजूद भी बॉम्बे वालों को उनकी जो सहनशील है उसका वो गैर फायदा लेते और 100% गलत है। आपने कभी MP MLA नरेंद्र जैसे मोदी सर है, इन लोगों ने कभी देखा है बोलने के लिए क्या जाता है पब्लिक को ऐसा करो वैसा करो। जरा बिल्कुल सही आप बोल रही है हर्षा जी, बिल्कुल सही बोल रही है। और यही सब सवाल हम भी उठा रहे हैं। इनफैक्ट दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हर्षा शाह इज ब्रिंगिंग अप देयर, द फैक्ट दैट द रेलवे बजट वाज ड्रॉप्ड इज वन key issue that she has as the president of the Commuters Association. But on that note, time now to take a quick break. We'll come back and continue this conversation.
Welcome back. Ashwini Lohani, the chairman of the Central Railway Board, says that a foot-over bridge was sanctioned for Elphinstone Station during Suresh Prabhu's regime, as the existing bridge was found to be inadequate to the needs of growing passengers for the amount of 9.5 crore rupees. As a matter of fact, the railways have confirmed that tenders for this foot-over bridge were floated today. However, no independent study was conducted by the Indian Railways on how many foot-over bridges existed and what is their condition. Let's now go across to Aditya, who is at Elphinstone Station. Aditya, what is the situation like at Elphinstone Station at this point? Are trains running on schedule right now? Well, right now I am at KM Hospital, where 22 the people who have died has been admitted over here, and the injured 25 has been admitted over here. The treatment is going on. We have one of the victims' brother, the Rajesh Kanodia. Let's understand by him what exactly happened. Sir, आपके बड़े भाई सतेंद्र कनौजिया, क्या हुआ है उन्हें और कितने बजे हुआ, आपको मालूम कितने बजे पड़ा ये? सर मुझे 11:30 बजे मालूम पड़ा। दूसरों के व्हाट्सएप के जरिए सब मैसेज आ रहा था, भाई उस एरिया में काम करने जाता, इसलिए मैं फ़ोन लगा रहा था। 10-15 बार फ़ोन के उसने उठाया ना, तो मुझे डाउट गया। फिर सब पता कर रहा था, तो उसमें जिसकी डेट थी वो फ़ोटो आ गई थी, करीब करीब सबको दिख रही थी। तो कुछ लोगों को पता चला कि जो इंजर्ड है उनको KM में लेके गए, तो हम लोग KM हॉस्पिटल आए, तो लावारिस में मतलब उनको रखा गया था। उनका क्योंकि ID जो था बैग में था, बैग मिस हो गया था, तो इसकी वजह से हम लोग KM में फिर पूछताछ किया, तो फिर मालूम पड़ा उनको ICU में रखा गया है। अभी उनकी स्थिति कैसी है? चोटें कहाँ पे उन्हें आई है? सर में चोट लगे और हाथ में चोट लगे हैं, तो अभी ICU में रखा गया है। अभी तो हालत में कोई सुधार हो ही नहीं है, ट्रीटमेंट चालू है। तो आपके साथ और भी कई फैमिलीज हैं यहाँ पे, मालूम पड़ा है कि 25 लोग इंजर्ड हैं, तो उनकी फैमिली भी यहाँ पे आई हुई हैं। सबकी फैमिली तो आई रहेगी सर, इंजर्ड है तो जिसको पता है वो सब जन आए ही हैं। कुछ रेलवे की तरफ से आपको कुछ मदद मिली है, अगर आप बता रहे थे तो क्या है? हाँ, रेलवे वाले आए थे, कुछ 500 रुपये का चेक दे के गए, चेक या कैश दे के गए हैं। 500 रुपये? 500 रुपये बोले ये रेलवे की तरफ से है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका मैं क्या करूँ, कहाँ खर्चा को, इसमें ठीक तो होएगा नहीं, कहाँ करूँ, इसलिए इसको निकाल के देखा नहीं, अभी तक जैसा है वैसे ही रखा हूँ। समझ नहीं 500 रुपये को क्या करें हम, वो कहाँ खर्चा करें। तो सतेंद्र जी आपके बड़े भाई, उनकी कुछ फैमिली होगी, बच्चे उच्चे भी हैं, कुछ उनको मालूम पड़ा है? अभी तक उनको हम इतना बताया नहीं, क्योंकि वो टेंशन में आ जाएंगे। मैं बोला थोड़ा सा चोट लगा है, अभी ठीक है करके उनको, वो गाँव में है। गाँव में है जी। और कहाँ पे वो काम करते थे, मतलब कहाँ पे काम करते हैं? जैसे बस वेस्ट में करते, लोअर वेस्ट में काम करते थे। सर रोज़ किस तरह ये सफ़र? जी 10:30 बजे 11 बजे के आसपास आना जाना उनका डेली का रहता है। 10 बजे की ड्यूटी थी उनकी। कभी शिकायत करी उन्हें आपसे कि मतलब ट्रेन में बहुत गर्दी होती है या फिर तो आम बात है सर, गर्दी तो बॉम्बे की ट्रेन में सबको है, उसमें तो कोई सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार जो कह रही है कि हमने टेंडर पास, और कहीं ना हो, क्योंकि बॉम्बे में कम से कम 10-15 ब्रिज ऐसी है कि जो टेंशन देते हैं पब्लिक को। अभी आज के बाद तो लोग सतर्क हो जाएंगे कि भाई थोड़ा रुक के जाएंगे, क्योंकि ये हादसा दोबारा कल ना हो जाए। Alright, that was Aditya from KEM Hospital giving us an update of the situation there and talking to one of the family of somebody who is affected by this tragedy. In fact, let's now go across to Sudhir Badami, who's a transport analyst. Sudhir, thank you so much for joining in. As a transport analyst, obviously you've been keeping track and understand how the railways have been functioning so far in Mumbai specifically. What is your assessment of the state of our stations and the state of our local trains? Could you repeat that, please? I couldn't hear it properly. All right, am I audible now? You're audible, but your voice is cracking. All right, Sudhir, my question to you is, what is your assessment of the state of our trains and of our local stations? I think since I have not heard you very clearly, let me come to the main issue connected with not just this station, with all stations and the entire railway system. It's not actually entire railway system. It is urban transport which comes into picture, and the responsibility of urban transport belongs to the state government and not the central government. Therefore, we must have both the railway, central and the western railway, suburban system must be under one division, which is what has been by demand by many people, many experts within the railway system itself. It's just a matter of political will. The minister just has to sign that one letter saying that these two are made into a division. Ultimately, we had 6 divisions many years back. We had, I think, about 20-21 divisions
making some of these practical levels of operation. Mumbai is unique. It's suburban railway system, plus it also has long distance trains. So it has to have a system which is independently working, and it doesn't depend on central government or the railway board sanctioning funds. Funds must come here because it is carrying about 80 lakh people. Important thing is that Mumbai carries, the railway system carries 3,60,000 persons per hour during peak period, and during its capacity is only 1,80,000 persons per hour. And therefore the system must have, the urban transport system must have extra capacity of 1,80,000 persons per hour, which is actually speaking in Mr. Chief Minister's court. He has to take a decision, he has to take a call, and he has taken a call apparently by going for metro. But when that is going to get completed, I am not very sure. They are very optimistic, but I am so practical and not pessimistic. I think I am realistic. It will take not less than 15-20 years. So we are actually facing a major problem, and there are solutions available which the state government had actually embarked upon in 2008 and 9, and that solution was towards implementing bus rapid transit system here. But for some various reasons which I am totally unaware of, they have not gone ahead with that, because by then, if they had implemented this, the crowd in the railways would not have increased to 80 lakh people. It would have remained at 60 lakh or even less than that. Right. So that is... All right. All right, like some crucial points being brought up there by Sudhir Badami. Of course, there are a lot of questions left unanswered, and the fact that it took this kind of a tragedy for the authorities to come out and approve the new footover bridge at Elphinstone today is what it has been approved. 9th of November is when the tender will open up, and then whatever time it takes to actually open up. But of course, we are going to continue asking all these questions, continue this discussion through this evening, and including on Urban Debate with Peyton D'Souza. So do stay tuned for that. जान गया है, कुछ जवाब देने वाली है क्या? ये जो हुआ है, ये हम लोगों ने कभी सपने में भी सोचे नहीं है कि इतना बड़ा मैटर होगा, जो 25 लोग मरे वहाँ पे। Because of this, the overcrowding, this incident happened. पत्रा तोड़ के हम लोग निकाला है, मेरे हाथ में भी मार लगा है। अगर ये ब्रिज दूसरा एक वहाँ कनेक्शन दिया होता वेस्ट में, तो ये हादसा नहीं होता था। सीसीटीवी फुटेज लगा के बैठे, वो लोग को इतना भी पता नहीं है कि कितनी पब्लिक आ रही है। जो हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी ऐसे हादसे में होती है, चीफ सेफ्टी ऑफिसर से हाई लेवल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं।